इस साल के असली दिवाली बॉम्ब्स तो हमें ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ दे रहे हैं, बट ऐसी अनसर्टेनिटीज़ के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना, अपने दिमाग को एक काम दिए की तरह रखना इज़ द रियल टैलेंट। एंड इस दिए को कैसे जलाना है, वो हमें बताएँगे मिस्टर सिद्धार्थ खेमका, द हेड ऑफ रिटेल रिसर्च फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। एंड ही इज़ गोना शेयर सम एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ विद अस दिस दिवाली 2025 एके संवत 2082। थैंक यू। सबसे पहले विशिंग ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉफिटेबल समवट 2082। So before we get started with all the questions, I would like to say thanks to Motilal Oswal for giving me this opportunity and this platform and wish you all a safe and happy Diwali. So Mr. Siddharth, I would like to ask first things first, आपको क्या लगता है हाउ इज़ द ब्रॉडर मार्केट आउटलुक एज ऑफ नाउ, क्योंकि इतने मार्केट अनसर्टनिटीज़ है, जियो पॉलिटिकल इशूज़ है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो अगर आप देखें लास्ट एक साल में मार्केट हैज़ बीन लार्जली रेंज बाउंड एंड इनिशियली वी सॉ सम करेक्शन बट देन इट रिकवर्ड. देयर आर वेरियस फैक्टर्स एट प्ले हियर बोथ फ्रॉम अ ग्लोबल एज वेल एज फ्रॉम अ डोमेस्टिक परस्पेक्टिव. अगर ग्लोबल की बात करें तो हमने देखा कि स्टार्टिंग में एक टैरिफ जो यूएस के साथ एक ट्रेड डील होने वाली थी वो हुई नहीं और हमें वन ऑफ द हाईएस्ट जो यूएस टैरिफ 50% टैरिफ पे हमें लगा दिया गया जिसकी वजह से थोड़ा मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ. कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी थे ग्लोबली प्लस इंडिया पाकिस्तान तो जिसको लेकर भी मार्केट थोड़ा सा नर्वस हुआ. बट बाद में हमने देखा कि वापस जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव थे और उसको लेकर मार्केट वापस रिकवर कर गया. तो पिछले एक साल में अगर आप देखें तो निफ्टी रफली अबाउट 4 to 5% पॉजिटिव है. मिड कैप भी सिमिलरली 4 to 5% पॉजिटिव है. बट स्मॉल कैप वहाँ पर थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिली जो डाउन अबाउट 2 to 3% है. तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव रही है. सबसे पहले तो आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट किया, सीआरआर में 150 बेसिस पॉइंट्स का कट किया और बहुत एनफ लिक्विडिटी इंजेक्ट किया सिस्टम में. उसके बाद अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने बजट में एक टैक्स बेनिफिट दिया जिसकी वजह से भी थोड़े से कंजम्पशन को सपोर्ट मिला. उसके बाद अच्छी मॉनसून थे, इन्फ्लेशन लो है, ग्लोबली क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रहे हैं. और अर्निंग्स की बात करें तो ये एक मिला-जुला इम्पैक्ट था क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स ऑफ डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स फॉर द लास्ट 3 to 4 क्वार्टर्स हैव ग्रोन इन मिड सिंगल डिजिट, 4 to 5% अर्निंग्स ग्रोथ जिसकी वजह से हमें जो मोमेंटम था मार्केट में, वो कहीं न कहीं लॉस हुआ और मार्केट कंसोलिडेट किया. करेक्ट, करेक्ट। एंड बिटवीन ऑल दीज़ थिंग्स डू यू थिंक अभी आगे आने वाले टाइम में कुछ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी वी कैन फील, इज़ इट सो? और सो मार्केट में मुझे लगता है कि जितनी वोलेटिलिटी थी वो हो गई है. अब हम यहाँ से कंसोलिडेट कर रहे हैं और आगे चलकर एज एंड व्हेन थिंग्स रिकवर सो हमारे को बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो हमको लगता है कि समवट 2082 में मार्केट को सपोर्ट करेगा आगे चलकर यहाँ से रिकवरी देखने के लिए. we see it, all these things at such a positive note, do you think there are few prominent sectors that one investor should be looking forward to? Because our viewers would love to hear from this. डेफिनेटली जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक डोमेस्टिक थीम चल रही है इंडियन मार्केट्स में क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें तो ट्रेड वॉर जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसका रेजोल्यूशन शायद हो, ये हमारी होप है. बट अगर जब तक नहीं होता है तब तक ये जो एक्सपोर्ट्स फोकस सेक्टर्स हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रेशर में रहेंगे. आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल्स, सो ये सेक्टर्स को अवॉइड करें. डोमेस्टिक थीम जो है वहाँ हमें लगता है कि चाहे वो कंजम्पशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये थीम्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. जो वेरियस डोमेस्टिक फैक्टर्स है, इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन, मॉनसून हैज़ बीन प्रीटी गुड, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल एंड टू टॉप इट ऑल गवर्नमेंट ने जो पहला रिफॉर्म अभी स्टार्ट किया जीएसटी 2.0 जिसके अंडर में रेट्स जीएसटी रेट्स कम किए. तो इसे इसके बेसिस पे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कंजम्पशन ग्रोथ देखने को मिलेगा. इसके साथ ही अगर आप देखें मैन्युफैक्चरिंग है, अगेन वहाँ पर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का, काफ़ी स्पेंडिंग है. अगेन लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द डोमेस्टिक मार्केट्स, चाहे वो ऑटो हो, डिफेंस हो, कैपिटल गुड्स सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा. Lovely. And what about banking sector? Because it is something that is interesting topic. Yes, I think if you look at banks, after almost 2-3 quarters of a flattish growth, I think now things will start improving on the banking. हमें लगता है कि H2 second half of FY26 we'll see an earnings recovery in banks. NIMS compression has already happened, so bottoming out of NIMS that will help. क्रेडिट ग्रोथ बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट रेट दैट विल स्टार्ट हैपनिंग. फेस्टिव सीजन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है तो इन सब को लेकर भी मार्केट में क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगा. तो हमें लगता है कि जो लार्ज कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, लार्ज बैंक्स हैं, इनमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. Lovely. So there's banking, there's consumption, there's manufacturing.
सो मतलब इंडिया के लिए एक पॉजिटिव नोट आगे कंटिन्यू हो सकता है, भले ही शायद शॉर्ट टर्म ना हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द मार्केट रिकवर, लाइक दीज आर द प्रोमिनेंट सेक्टर्स दैट वन शुड बी फोकसिंग अपॉन। एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट इज़ गोना बी अ ग्रेट डेकेड, आगे अच्छा ही टाइम आने वाला है। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई वांटेड टू आस्क इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्लैक स्वन इवेंट, अगर ऐसा कुछ होता है जो अनफॉर्चुनेट है, अनसर्टन है, तो ऐसे टाइम्स में डू यू थिंक इन्वेस्टर्स एक्चुअली लाइक टू लुकिंग फॉरवर्ड टू हेज अराउंड गोल्ड या फिर ऐसा कोई अदर एसेट क्लास? डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच टू to equity markets or stock market? See, Hardik, if you see, gold historically has been a hedge, but if you see last few years, gold has become a growth asset instead of a hedge. Globally, central banks are moving away from US dollar as a reserve currency, and they are moving towards gold. The geopolitical issues globally have made people switch to gold again as a hedge, but the demand for gold has shot up. So precious metals like gold, silver, I think A definitely works as a hedge in any global uncertain black swan event, but more so given the changes in way central banks are now looking at the reserve currencies moving away from dollar. I think gold, silver, they could continue to do well, and one can definitely put some allocation not only as a hedge but also as a growth asset. Okay, lovely. And do you think gold is, as a better hedge position, or as a, as a diversification, or you think silver can also be considered over here? Because silver has been in hype since, since recent times, and people now see that there has been a consolidation period that has ended up, and abhi उसमें एक अच्छा अपसाइड मूव आ सकता है, एंड ऑल द एनालिस्ट दैट दे आर सेइंग अराउंड, तो डू यू थिंक दैट इज आल्सो कंसिडरेबल ओवर हियर? बिल्कुल, देखिए, अगर आप सिल्वर की बात करें तो हिस्टोरिकली व्हाई पीपल डिड नॉट यूज्ड टू प्रेफर सिल्वर इज़ बिकॉज़ अगर आप फिज़िकल में सिल्वर लोगे तो द क्वांटिटी दैट यू बाय ऑफ द सेम अमाउंट वर्सेस गोल्ड वाज मच हायर, सो स्टोरेज प्रॉब्लम है, ऑल दोस थिंग्स। बट विद फाइनेंशियलाइजेशन एंड यू कैन नाउ इन्वेस्ट थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू सिल्वर। देयर आर सिल्वर ईटीएफ्स, देयर आर अदर वेज वेयर यू कैन invest in silver. And silver is also versatile in the sense that it has industrial use compared to gold, which is just a reserve currency. Other apart from that, there is no use of gold. So I think silver again has the similar characteristics. You don't have abundant supply, and with demand going up for precious metals, I think silver has all the potentials to outperform from here going forward. लवली सिद्धार्थ जी, बहुत बढ़िया। सो सिंस हमने गोल्ड सिल्वर सब की बात कर ली, धनतेरस की बात होने वाली है, तो सिंस यहाँ पे आगे एक टॉपिक है जो सब हमारे व्यूवर्स इन्वेस्टर्स चाह रहे हैं कि उसके ऊपर हम लोग बात करें। व्हाट डू यू थिंक एवरी दिवाली इन्वेस्टर्स विल लुक फॉरवर्ड टू मोर ट्रेडिंग, तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? ये कैसे ऑस्पिशियस होगा अपने स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर हाउ डू यू थिंक हाउ दिस इज सो क्लोज टू ऑल दीज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स? बिल्कुल, अगर आप हिंदू कैलेंडर की बात करें तो दिवाली एक बहुत ऑस्पिशियस ओकेजन है हमारे लिए बिकॉज़ दैट मार्क्स द चेंज ऑफ द हिंदू कैलेंडर एंड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, हम सब अपने बुक्स की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, और वी वांट टू स्टार्ट द न्यू ईयर ऑन एन ऑस्पिशियस वे। सो वी ट्राई एंड डू इज़ दैट वी डू अ ट्रेड ऑन द मुहूर्त डे, on the Diwali day, on the Lakshmi Puja day, and we want to have a new entry into the books. So that is why you see that कि लक्ष्मी पूजा करते हैं, जो बुक्स पुराने ज़माने में बही खाता होते थे, रेड कलर के बुक्स होते थे, तो हम उसकी पूजा करते थे और उसमें एक एंट्री करते थे कि ये आज का दिन का शुरुआत एक अच्छे ऑस्पिशियस टाइम में हो। तो ये एक मेन रीज़न है मुहूर्त ट्रेडिंग करने का ऑन द दिवाली डे, लक्ष्मी पूजा के दिन। इसके साथ ही आजकल एक नया आ गया है फैशन कि आप मुहूर्त ट्रेडिंग में या दिवाली के जो लक्ष्मी पूजा के टाइम पे एक प्रॉफिट बुक करें, ताकि आपके बुक्स में एक टोकन प्रॉफिट आए। तो ये भी एक नया एक स्टाइल आया है जहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू डू इसकी हम अपने बुक्स में प्रॉफिट दिखाएं एंड स्टार्ट द ईयर विद अ पॉजिटिव नोट। अगर एक दिन प्रॉफिट किया तो आपको पूरे साल प्रॉफिट हो सकता है इन दैट वे। ओके, लवली। ओके सिद्धार्थ जी, आई थिंक दिस इज द हॉट टॉपिक दैट वी आर सिटिंग राइट नाउ ओवर हियर फॉर दिस होल एपिसोड हैज़ बीन शॉर्ट फॉर। व्हाट डू यू थिंक इस टाइम पे मुहूर्त ट्रेडिंग जो हमेशा होता है उसमें मुहूर्त पिक्स शेयर करते हैं मोतीलाल ओसवाल, सो व्हाट डू यू थिंक इसमें आसपास आपको कौन से सेक्टर्स प्रोमिनेंट लगते हैं जिस पे आसपास हम लोग वी कैन स्पीक अबाउट टुडे? सो डेफिनेटली आई थिंक जो की थीम्स और सेक्टर्स हमें पसंद है उसमें सबसे पहला जो है वो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट। सो बीएफएसआई एंड कैपिटल मार्केट इज द की थीम। दीज आर लार्जली डोमेस्टिक फोकस, एंड एज आई सेड
This year we have seen interest rates coming down, so NBFCs have seen a lot of benefit out of that. Banks, as I said, NIM compression is bottoming out. From here, credit growth will pick up, and hence we'll see strong earnings growth in the second half of FY26. So banking and financials is the key theme. इसके साथ ही insurance and capital markets. These are two other themes within the broader financials that we like. We believe that the insurance penetration is only going to go up. The GST rate cut for insurance, that is another positive driver for insurance. And capital market continues to be a long-term structural growth story for India, with more and more investors coming into the market, and lot more activity happening. People looking at equity markets either directly or through mutual funds, through asset management companies, through wealth management companies. I think the entire capital market ecosystem should do well going forward. Lovely. So Motilal Oswal also aims to, focus on these themes itself. So Siddharth, apart from this, do you think there are any such sectors जिसपे Motilal also aims to look forward to? Yes, I think apart from the financials, manufacturing is another key theme that we are very positive on. As I said, there are various sub-sectors within manufacturing, be it defense, capital goods, EMS, electronic manufacturing. There is a lot of focus from the government in the last several years to make in India. There have been PLI schemes, so incentivizing companies to manufacture, set up plants. I think so the entire theme of manufacturing in India should do well. Defense is a key theme within that. Atmanirbhar, especially in the global context of the geopolitical issues, India is not only making for India, but India is also making for a lot of the global countries where they are looking for a neutral partner to supply their defense requirements. I think electronics is something that has been the stronghold of China for a pretty long time. But if you look at today, India is one of the largest exporters of iPhones out of India. We are manufacturing again laptops, tabs. A lot of our basic consumer durables, AC, fridge, washing machine, all are being manufactured in India. And some of these manufacturers are now looking India as an exports hub. The latest company that got listed, LG Electronics, which is a global company setting up in India, now got listed in India, is targeting to export 10% of its revenue out of India. So I think that is one key theme that should play out over the next couple of years. But do you think setting up any kind of manufacturing hubs or around in India, there are a lot of documents, there are a lot of things that, which delays the whole program, and it feels like once you want to set up any kind of manufacturing hub or anywhere overall India, so it takes a lot of time compared to any other place, like be it in China. So it might take around a month or two over there, but over here it might take a lot of time compared to global players. Do you think that might be a solvable problem which will boost more of it? So, Hardik, I think things are changing, and we are seeing a lot of global companies coming up and setting up the plants in India, manufacturing units. The government is also understands that issues with regards to red tapeism and bureaucracy, and I think there are sectors where government is focused on fast tracking, single window clearance. We are seeing that in defense. We are seeing that in electronics manufacturing. We have seen that India is a global hub for auto ancillary manufacturing. We are one of the largest pharma manufacturers, specialty chemicals. So I think there is a lot more to do, yes, but the change is positive, and we should see more and more companies looking at India to set up their manufacturing base. Okay, and do you also think that electronics sector in general have a lot of scope to grow further? Do you think so? So apart from the basic consumer durables that we are making, we are now also stepping it into the semiconductor value chain. There are 4 to 5 companies which are already in the process of setting up the manufacturing plant. So we will be stepping in the getting into the OSAT facility, which is your assembly and testing of semiconductors. Nonetheless, there are very few companies globally doing that as well. So I think over the next couple of years or over the next few decades, we will climb the value chain in the semiconductor as well. But nonetheless, again, I think that's a big step for a country like India to get their foothold in the global AI as well as the digital revolution that is happening through the manufacturing of semiconductors in India. So Siddharthji, what do you think? What are the few more prominent sectors that Motilal Oswal, might look forward to apart from the sectors that you have mentioned right now? So I think one more sector that we have not covered is the digital.
India is entering the digital phase. We are seeing the AI revolution. Companies like platforms companies, they are doing very well. With a demographics like India, one of the largest population globally, I think the way things are getting done, business is being done is through the digital way. And companies like quick commerce, platform companies, fintech companies, I think they are the future, and where we are seeing huge growth potential. So I think another theme that should play out over the next couple of years is the digital theme in India. Okay, lovely. Do you think there is AI, there is data centers that can play a prominent role, for this sector growth, or do you think So so I there's think, anything yeah, else? yeah. So if you look at data centers, I think India is setting up a lot of data centers as well. Globally, the requirement of data computing powers for AIs, that is going to go up. The kind of transactions happening, and the government regulation that Indian data should stay within the boundaries of India, that is also leading to a lot of demand for data centers in India. I think that is a theme that should also play out over the next couple of years. Lovely. And do you think AI is now taking over, since in the modest way we can say, and also in daily life use of an individual, which can be another prominent sector which is already in talks, but now do you think there is more growth left in this sector, or how is it? Yes, I think AI is just started. The way things are happening, the way we our daily lives are, or the way business is being conducted. I think internet revolutionized that. I think AI will only exponentially take that going forward. The efficiency at which we do work, that will change, and I think no life, be it any business or any individual, who will not be touched by the AI revolution that is going to happen. So, Siddharth, coming to the hot topic every viewer is waiting for, everyone would like to know कि मोतीलाल ओसवाल के इस साल के मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से हैं, एंड व्हाट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट? बिल्कुल, देखिए, among the market themes that we discussed, I think the first one is the financials, and within that, insurance as a space is doing very well. The first Muhurat pick that we have is Max Financial. They have the subsidiary called Axis Max Life Insurance, and they are doing pretty well. पिछले कुछ क्वार्टर में कंपनीज की ग्रोथ इंडस्ट्री से काफ़ी बेटर आई है. मैक्स का जो स्टेक एक्सिस ने लिया है, उसके वजह से इनको जो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है एक्सिस के बैंक ब्रांचेस से, उससे काफ़ी बेनिफिट मिला है. एंड मुझे लगता है कि अब ये जो ग्रोथ है, इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू सम ऑफ द लीडर्स, एंड वी सी दैट द ग्रोथ कमिंग बैक. एंड फाइनली दे आर मर्जिंग, रिवर्स मर्जिंग द insurance business with the listed entity, which is Max Financial. That should remove the overhang of a valuation discount, holding company discount चला जाएगा, एंड मुझे लगता है कि synergies काफ़ी प्ले आउट होंगे. तो ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ है, वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, एंड एक्सिस के टाइप की वजह से काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा. तो जो पहला पिक है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज. Okay, lovely. So I think there's more to gain, less to lose, right? With such stocks. Okay, what would be the second pick? The second pick is Swiggy. This is a quasi play on both the digital platform as well as the India consumption story. With the festive season coming up, we believe a lot more orders will be given, and with the company having a large network, I think they are set to benefit. They have started charging a platform fee, which is leading to free cash flow generation. The food delivery business is improving fast and is catching up with the market leader, which is Zomato. I think in the quick commerce business, the competitive intensity is coming down. Most of the players, including the latest entrant Zepto, is now looking at a profitable growth. Hence, we believe that in the quick commerce business also, Swiggy should turn around and break even by the third quarter of FY26, which should lead to profitable growth going forward. And with the core business matrices gap with the market leader coming down, we believe that the valuation gap for Swiggy should also come down, and hence we believe one can look at Swiggy as the stock pick for the next 1 year. Lovely. So do you also think Swiggy someday might enter the Nifty 50 stock? Definitely, I think quick commerce as a business is a structural story for India. We have already seen a company like Eternal, which is erstwhile Zomato, entered into the Nifty 50, and I think someday even Swiggy can reach that stage. Lovely, lovely. Okay, and what would be the third pick according to you? Third pick is again a pick play on the India consumption story in the from the hotel space. We like the market leader, Indian Hotels. We have seen that the demand has far outpaced supply over the last couple of years. One good thing that we have seen is that
post pandemic, post COVID, Indians have started traveling more, have started visiting more, and Indian hotels, which was earlier pre-COVID largely depend on foreign tourists, is now enjoying the growth from the domestic tourist travelers. So the other thing that they have done is the growth in their rooms are now focused on management contracts. So over the next 2 3 years, while they are adding their own rooms of about 3,800 rooms, they are adding more than 16,000 rooms on the management contract basis. So it not only gives them a strong growth pipeline, but it is also asset light on the balance sheet and helps improve the return ratios. So overall, I think valuations, the stock has consolidated in the recent past. Valuations are comfortable, and with the festive season, with the holiday season, year end coming up, I think there could be good growth in Indian hotels. What would be the next pick according to you? So the next pick is from the manufacturing space, which is a defense play. India's market leader, Bharat Electronics. It's a very strong order book, and going forward, we believe that the company will continue to deliver strong results. Valuations are very attractive, and with the multi-decadal growth story, we believe that Make in India is the next growth story, but Make for the World is the next growth driver for Bharat Electronics. So I think with this strong order book and the government support on the defense space, Bharat Electronics can be the next pick for the 1 year Diwali. Okay, that's great. So we have consumption, we have manufacturing, and what else do you think can be the prominent sector? So the next theme is the travel and tourism. Again, we like VIP industries. There is a management change which should drive growth going forward. Industry leading growth है, and with the marriage season coming up, generally we see that Indian marriages में दो चीज़ बहुत ज़्यादा खरीदे जाते हैं. एक है गोल्ड ज्वेलरी और दूसरा है सूटकेसेस. So I think with their strategy in diversifying their various brands in the mid and the premium segment, plus the change in management, and I think the GST 2.0 rate cut, that should also drive growth for the luggage industry, where VIP is a market leader. So I think that's my last pick for today is VIP industries. Lovely. So I think VIP is now gonna see a growth story from here rather than all the mishaps that have happened. It might now come to an end, and now there can be a prominent growth in this stock. Okay, that's lovely. That's great. Okay. So I would also like to ask Siddharth. So Siddharth, लास्ट ईयर के मुहूर्त स्टॉक पिक्स के हिसाब से ऐसा कोई स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे परफॉर्म किए फॉर दैट वर पिक्ड बाय मोतीलाल ओसवाल्स टीम? Hardik, so if you look at last 1 year, market has largely remained flattish. But in that time, from our last year's pick, two stocks that clearly stand out. First one is Eternal, which has gone up by almost 40%, and the second one is Amber Enterprises. So one is the digital play, and as well as consumption play, where the food delivery business is consistently delivering strong growth, and the quick commerce business has picked up pace. The other is a play on electronic manufacturing in India. Again, companies are making in India. They are seeing strong growth, and with the government support in the form of PLI schemes, I think Amber has done really well, both in the mobile manufacturing as well as in the consumer durable manufacturing. So Amber has gone up about 33%, and Eternal has gone up almost 40%. सो लास्ट ईयर इटर्नल, दिस ईयर स्विगी. ओके, आई थिंक फूड डिलीवरी सब घर पे बैठ के मंगा रहे हैं मतलब. अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके सिद्धार्थ जी, एक लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए पूछने के लिए मेरे को. आफ्टर अराउंड दिस मुहूर्त ट्रेडिंग आई वुड लाइक टू आस्क फॉर समवन हु लाइक्स टू इन्वेस्ट 10,000, 20,000, 50,000 rupees around this Diwali as such this auspicious occasion, what do you think, what can be the right practical allocation you can say that might help them to understand कि इतने आपने जो स्टॉक्स बताए उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? So the best way is to diversify, and we have given five stocks. I think one should equally distribute a small amount in between all of the five stocks. So if you are taking five stocks, 20% each, well diversified for the next 1 year. ओके, दैट्स ग्रेट. ओके, विद दिस आई थिंक एक लास्ट आपको एक क्वेश्चन पूछना था. एज पर योर एक्सपर्टीज, इज देयर एनी वन एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स हु हैव बीन विद अस सिंस दिस लास्ट पार्ट ऑफ दिस होल episode? So I think equity markets is a lot of excitement, but you have to do your own research. Without research, if you jump in, I think you will face mishaps, you will face volatility. So सही research करिए,
take help from experts. Motilal Oswal comes out with a lot of research reports. You can visit our website, visit our app. I think you will get a lot of ideas, lot of support. So do your proper research and then get into the markets. Lovely. So blind game नहीं खेलना है guys. You always have to do your own research and you can always trust on Motilal Oswal. So with this, we wrap up this year's Motilal Oswal Summer 2082 Mura Trading episode. Thank you Siddharth for sharing your thoughts with us. So guys, do like, share and subscribe this channel. We wish you all a safe and happy Diwali. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.